class as well. चले, thank you then sir, The thank you, class is बहुत yours, sir. शुक्रिया, Thank you. Thank you. Please take care. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया sir, बहुत शुक्रिया. Okay, Assalamu alaikum everyone. Let's begin this session. Um, uh, we had a good, effective, quite a yielding first session, and I was hoping to have this session maybe somewhere in the next week, but I'm glad that we're quite glad that we got done with our other uh, session comprising batches 241, 246 during the same week, and I had one more to go with them. So it was the last session, and got done with that. Got done with that class. So their course is over now, and we could, have the luxury of jumping back to towards you people. और अच्छा हो गया है कि अब हम जितना जल्दी we can get governance and public policy for you people out of the way, उतना ही बेहतर इंशाल्लाह होगा. Can someone recall um, where we stopped after the first session? If you people get a chance to look at your notes, you'd be able to know where we exactly stopped. So I can start right from there. Stakeholders, but we did stakeholders, right? Okay, can someone also just write in the chat what topics did we cover in the first session? What topics? Hmm. Okay. Okay. Right. History of GPP. Interesting. No. No. We did not discuss history of governance and public policy. It was evolution or history of the concept of governance. So of course, different thing than history of governance and public policy as a discipline or as a subject. That's not what we discussed. We discussed evolution of the term governance, how it evolved, and how governance as a discipline and as a term and as a focus of the public policy process or the development process or of the political process, how governance as an end, good governance per se, entered into our discourse. This is what we discussed. And that process of how governance entered our discourse was a very gradual process that took place over a large span of 3-4 decades. And so that was a good, interesting thing to understand. Give you a quick recap of that, because a lot of what we discussed today about good governance is linked to that concept of evolution. हमने उसमें very simply what we discussed was that that there was this phase of the world where the focus of international economic policies was and this is this post-war time, right after World War II, when the world was becoming more globalized and countries were coming together for trade and so on and so forth. So what was felt was that this international cooperation facilitated by international trade and integration and so on and so forth were, the were,
the recipe for growth. And it was a very Smithian ideas postulated by Adam Smith, the great economist, in his magnum opus book, The Wealth of Nations in 1776, where he talked about how, when trade happens between two countries, both of them are better off and both of them benefit. And uh, taking a leaf from the same Smithian ideas, the international economy post World War II began to think about how these international trade could be facilitated and how countries could come together, and then of course get embedded into this international trading system. So therefore, international trade for a very, very long time dominated other schools of thought, and it was the only big, of course, at least for during the Cold War days, at least for the American imperialist people who were part of the American bloc during the Cold War. The recipe was international trade, but then it soon changed. It soon changed because they began to wonder that if you have to foster greater connectivity and trade and so on and so forth, you have to develop. And if you have to be the winner in this deal, you have to be the exporting country instead of being the importing country. And to be an exporting country, you need to develop your industry. And so that is exactly what happened. The debate moved to industrial development very, very soon, especially in late 70s, early 80s. Why? Because at that time, some good results were coming out of China. China had closed borders. It's a communist country, but it was developing very, very fast during the 70s. So economists went into China to discover the miracle that was happening there. And the miracle was that, industries were setting up in homes, cottage industry, small industry. Small industry was doing this very, very large growth in the SME, small, medium enterprise sector. And so looking at the East Asian miracle, what happened in China and in Singapore and in Malaysia, the international community began to think that, this is the biggest driver of growth, which is industrial development, which is industrial growth. But that myth was soon busted when some economists back in the 80s began to write how, there's still injustice in China. There's rising income inequality as more industries set up. There are people who own this enterprise, own these factors of production of land, labor, and capital, and they've become increasingly rich over the years. But then there's also this people living off mainland China, and within mainland China, people living off the big, large metropolitan cities like Beijing, who are not so fortunate and who are not making the kind of money that these industrial entrepreneurs are making. So they thought that China by no means was a developed country because while they were managing economic growth, they were not managing economic development. Because development is not just, and this is a very important point I'm going to make, so I would want you people to imbibe this, that China was not managing annual economic development, even though it was managing a very, very high rate of economic growth. And by economic growth, I mean GDP growth here. But by economic development, I mean a host of other things that should come with economic growth, like, of course, better education, health, and then, of course, poverty alleviation. All of these three come together to make this beautiful term called human development that was introduced by Mehboob Haq in the year 1990 through the UNDP's Human Development Report. So what Mehboob Haq Saab in 1990 was that you develop these three areas of education, health, and reduce poverty, which means give people a better standard of living, and that is how you develop humans. But that focus, of course, came much later. But economists at that time
in the 70s saw that, all the majority of the development indicators were lacking in China, including health, education, and especially in the urban rural bias and urban rural inequality. And of course, the justice systems were not like what they were in the West at the time. So the Western commentator believed that China was growing economically but was not developing economically, because development was this multifaceted phenomenon. Development included economic growth, but only included economic growth as a pathway towards these development outcomes that I'm talking about, like outcomes like, improved healthcare and uh, higher literacy rates and better education and so on and so forth. So development economists only saw growth as a pathway to development, and they thought that, China was growing immensely, maybe at a rate higher than 7% per annum, which it is growing to date. But they thought that, development was not happening because all of the other indicators, these outcome level indicators, were not improving in China. So they thought, of course, then that industrial development was not, of course, was a driver of growth, but was not driver of development, and development is the ultimate end. So they then began to look at other contributors to development. And then came this concept of human development, where they thought that, the ultimate end is human development. If you grow through industrial development or some other means, if you're able to grow economically, that like you're managing a high rate of economic growth, you should spread the benefits of that growth amongst the people through some level of equity, and then so as to remove, of course, income inequalities, and then to achieve a certain standard of human development. Otherwise, that growth which countries make, if it is not spent on the betterment of the lives of the people, is no use. और इस बात के बाद फिर दुनिया ने फोकस एकदम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लिया. उन्होंने कहा अगर ह्यूमंस डेवलप कर रहा है कोई मुल्क, तो सिर्फ वो डेवलप्ड है. और ह्यूमंस डेवलपमेंट करने का क्या मतलब था? हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन. तो काफी अरसा फोकस रहा. लेकिन 1990 में उसी दौरान जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हो रही थी, तो डगलस नॉर्थ ने भी एक पेपर लिखा जो बाद में टेक ओवर कर गया. वो पेपर था इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के ऊपर. डगलस नॉर्थ ने, एंड डगलस नॉर्थ सेड that nations develop because of good institutions. And if you develop good institutions, automatically humans will develop. Because that process of redistribution, जैसे redistribution का process है कि आप सब लोग टैक्स पे करते हैं, आपका टैक्स का पैसा जाता है, और एक कोई सरकारी इदारा है जो रिच लोगों से टैक्स ले रहा है, और उसके बाद यानी पैसे की एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुई. हम सब जितने इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में लोग हैं, हर महीने एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो हम सबकी इनकम्स हैं, उसमें से हम टैक्सेस पे कर देते हैं. उसके बाद स्टेट अपनी मर्जी से उन टैक्सेस के पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है. सो वी कॉल इन इकोनॉमिक्स, यू कॉल दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसका मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि आप इनकम इक्वालिटी इंश्योर कर सको या इनकम एक्विटी इंश्योर कर सको. यानी अमीर और गरीब का जो फासला है आपस में, उसको कम से कम तर किया जा सके, जिसमें आप अमीर से पैसा लेते हो और गरीब में बांट देते हो. अमीर से पैसा लेते हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस गरीब पे भी लगते हैं लेकिन उस पर कम टैक्स लगता है, और अमीर पे, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सिंग, कि आपकी जितनी आमदन इनकम ज्यादा बढ़ती जाती है उतने ज्यादा आप पे टैक्स, अमीर से टैक्स लेके गरीब को चला जाता है. तो उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है. लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? ये अमीर लोग खुद ही अमीर लोगों से टैक्स लेके गरीबों में तो नहीं बांटते हैं, गरीब लोग अमीरों से उनका टैक्स छीन तो नहीं लेते. There are institutions who do this work. Now, this is just one example. And if those institutions have a good quality, if those institutions have several, good governance parameters, if they are functioning well on some good governance parameters, so
ऑटोमेटिकली ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी, इनकम एक्विटी इक्वालिटी अचीव होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाएगी इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आपके पास पैसा है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी में, वो तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बता देता है, लेकिन उस पैसे से आप अचीव क्या कर रहे हो? आर यू एबल टू अचीव बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन? आर यू एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी टू प्रोटेक्ट द पोरेस्ट ऑफ द पोअर क्लास is a question. Are you developing your infrastructure, your road infrastructure, your rail infrastructure, आजकल your power and energy infrastructure, so on and so forth. तो जिन ममालिक में ये नहीं हुआ, वहां ग्रोथ हुई लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ना ह्यूमन डेवलपमेंट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो डगलस नॉर्थ ने ये कहा कि अगर आप इदारे डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का फासला है, ये वो इदारे तय कर लेंगे, क्योंकि इदारे इस ग्रोथ से जो आपके पास पैसा आता है, पुट वेरी वेरी सिंपली, उसको वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यही इदारों का काम है। जैसे मैंने अभी टैक्सेशन वाली एग्जांपल दी, जहां इदारा एक ब्रिज, एफबीआर, आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक ब्रिज बनेगा कि वो पैसा कैसे अमीर से लेके गरीब या जरूरतमंद के हाथ तक पहुंचाता है। अब वो चाहे उनके लिए सड़कें बना दे उस टैक्स मनी से, या उस टैक्स मनी से वो कोई अस्पताल बना दे, या कोई डायरेक्टली कैश गरीब लोगों को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, जो अभी जैसे एहसास के फालत प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने किया, या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गवर्नमेंट करती है, तो वो उनको हम सीटीपीज बोलते हैं, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स। या गवर्नमेंट अक्सर टैक्सेशन के पैसे से सड़कें बना रही है जो मेरी और आपकी जिंदगी बेहतर करती है, या गवर्नमेंट अगर कभी उनसे कोई डैम्स बनाती है जो बिजली में और आप इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अदर बीन्स के थ्रू भी गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर हो। अब डगलस नॉर्थ की बातों के बाद दुनिया में फोकस चला गया कि अगर आप इदारे अच्छे बना लोगे, इदारे स्पेशली स्टेट इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड ने कहा कि इजियर सेड देन डन, भाई आप आके ये बड़े आराम से तो कह देते हो कि इदारे बना लो, इदारे बना लो, इदारे बना लो, पर ये इदारे बनाने का जो सिलसिला और इसका जो प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक प्रोसेस। वी कांट spin a magic wand and begin to develop our institutions. We've been trying our hand at this for the past several decades, but it's not very, very easy to develop institutions. How do we do that? उसके ऊपर फिर एक बहस छिड़ी, और जो इंटरनेशनल डोनर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, they jumped in. Like people like World Bank and IMF, जब हमने स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने ये सारे स्टेक होल्डर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिखवाई थी। They jumped in and they said कि ये हम बताते हैं कि how this will happen, how would you develop your institutions, हम बताते हैं। So they gave this framework called good governance. They said अगर आप ये 6 चीजें इदारों के अंदर इंश्योर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नेंस बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये 6 चीजें नहीं इंश्योर कर पाते, तो मीन्स यू आर गवर्निंग इन अ बैड वे, एंड देन ऑफ कोर्स योर इंस्टीट्यूशंस वुड नॉट डेवलप। So this good governance framework was both a recipe to develop institutions and of course then develop nations accordingly. And this was the best way countries could be governed. There's very interesting thing about this good governance framework. It has 6 dimensions, 6 indicators. Now, dimension is a different thing. Indicator is a different thing. Some people call them 6 principles as well. But indicator is something which is quantifiable, which is measurable. यहाँ क्या हो रहा है कि एक तो इन सबको डायमेंशंस तो कहा ही गया गुड गवर्नेंस की, पर इन सबको कोशिश की गई कि मेजरेबल भी बनाया जाए। मेजरेबल बने, जो कंट्रीज की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, उनका बैड स्कोर आए, उनकी फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पे फोकस करे, कैपेसिटी डेवलप करे उनकी,
और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी उन 5, 10, 15 ममालिक पे फोकस करे जो हर साल जिनका ये स्कोर गवर्नेंस का बहुत बुरा आता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई कंट्री है वो रेगुलेटरी क्वालिटी में बहुत अच्छा करता है लेकिन कंट्रोल ऑफ करप्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसी कंट्री का करप्शन का डेटा भी यूज करके उसको क्वांटिफाई किया जा रहा होगा, मेजर किया जा रहा होगा कि इस मुल्क में करप्शन का रेट या परसेंटेज क्या है। सिमिलरली जो इस मुल्क के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितनी इफेक्टिव रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये अब एक और सेकंड इसकी डायमेंशन। या रूल ऑफ लॉ जो एक थर्ड डायमेंशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उससे हर कंट्री का जब इन 6 के 6 इंडिकेटर्स पे अलग अलग स्कोर होता था और उसको फिर आप एवरेज आउट करके हर मुल्क का एक वन गुड गवर्नेंस का स्कोर निकालते थे और फिर वो स्कोर सारे ममालिक का कंपेयर होता था कि किस मुल्क का क्या, और अभी भी होता है, स्कोर है एंड सो ऑन एंड सो। तो उस पे ये फ्रेमवर्क फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया, फिर इसको आईएमएफ ने, यूनेस्को, यूएनडीपी, like all UN bodies and UN organizations, all of them endorsed it. And therefore, this good governance framework, these good governance principles became like a Bible of governance that all countries of the world began to look at these 6 indicators. And public administrators also began to look at these 6 indicators to know what right things they had to do to bring their countries back on track. And in a lot of ways, since for the past 20, 25 years, ever since the late 1990s when this concept came aboard, there has not been a single change made to this good governance framework, which of course is testament to the fact that it is universal. It is universal. It is inclusive. So it includes all the different dimensions that are needed. And one very, very important thing, that none of these dimensions is alienable, excludable, and why is that so? That you cannot alienate any of the dimensions, you cannot exclude any of the dimensions. और उसकी एक सादा वजह है, और वो सादा वजह ये है कि all of these 6 dimensions of this good governance framework are very, very strongly interrelated, and they have very, very strong complementarities. So one, of course, they are related to each other, but they also not only just related, but they complement each other. So if you work towards one, you are somewhat working towards the other as well, automatically, because they're so strongly interrelated, and then of course each one complements the other. I would give you one example of this, is that if you do not have rule of law, you would never have political stability. But political stability is a separate indicator from rule of law. If you're not able to control corruption, again, you will not ensure political stability. Or absence of violence, that is the full indicator. So these are some characteristics of this good governance framework, that none of the indicators or dimensions are alienable. All of them are universal. None of them are excludable. And by universal, I mean that all of them have a universal. This entire framework has a universal application. It could be applied exactly in the same manner in Pakistan as it could be applied somewhere in Somalia or Uganda or so on and so forth. That's a very universal application. For instance, इसको मैं किसी और इंटरनेशनल एजेंडा से कंपेयर करूं, जैसे SDGs. SDGs में जो ओशन और मरीन लाइफ के ऊपर SDGs है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके पास ओशंस नहीं है, उनको या उस तरह से मरीन लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, उन ममालिक के अंदर वो उसके इंडिकेटर्स रेलेवेंट ही नहीं है. So there is that non-universality when it comes to even international agendas like the SDGs.
but they had to put them in for those countries which did have a marine life. Those indicators had to be included. But that, of course, impacted the universality of the agenda. Then countries began the exercise of bringing home the agenda. इसको वो कहते थे localization, जिसमें उसी एजेंडा को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में उनकी कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट है वो उनको आइसोलेट करने की कोशिश करते थे कि अच्छा 244 इंडिकेटर्स हैं एसडीजीज के, तो इसमें से हमारे से रेलेवेंट 170 है या हमारे से रेलेवेंट 180 है, तो ये जो 170 या 180 को वो अलग कर लेते थे, आइसोलेट कर लेते थे. This process of course impacted the universality of all SDG indicators because not all of them were universal. Like the marine life या oceanic life से related जो आपके SDG indicators थे, they were non-universal. सिर्फ उन मुल्कों पे अप्लाई होते थे जिनके पास ये मामलात थे, जिनके पास naturally oceans थी या बहुत बड़ी marine life थी, जो कि कोर्स पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान के पास स्पेसिफिकली नहीं. तो हमें हमारे लिए वो इंडिकेटर्स, उसके अलावा भी बहुत इंडिकेटर्स थे, जब लोकलाइज किया गया एसडीजीज को तो फील हुआ कि दीज आर नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान. तो गुड गवर्नेंस के साथ ऐसे नहीं था. इट वाज अ वेरी यूनिवर्सल एजेंडा. एनी ऑफ द आर्टिकल्स, सारा कुछ रिपीट कर रहा हूँ, any of the indicators or dimensions of any of the six indicators are not excludable and not alienable. And this also stems from the fact कि ये सब किसी एक को isolate या alienate नहीं किया जा सकता, exclude नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी एक पे काम नहीं करते, मैडम आयशा 6 इंडिकेटर्स के ऊपर ही आज का पूरा भी लेक्चर होगा. मुझे थोड़ा सा ग्राउंड ले करने दीजिए, बस मैं उसी की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह. The entire lecture is about that. आज का हमारा सेशन पूरा गुड गवर्नेंस के ऊपर ही है. तो मैं सिर्फ अभी पूरे फ्रेमवर्क को समझा रहा हूँ कि उस फ्रेमवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फिर हम बारी बारी हर इंडिकेटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर इंशाल्लाह वहां से आगे चलेंगे. मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ और बहुत ऊंची नहीं बोल रहा, उसका फ्लो में नहीं बात कर रहा कि थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है. कोरोना तो खैर मुझे मेरा नहीं ख्याल है. आई हैव सम pre-COVID times inflammation issues in my throat, and that happens because of some other issues in my body. So, and those keep coming up every now and again. So today is one of those days when I woke up with an inflammation in my throat. So just bear with me. I'm trying to speak as loud as possible. Okay, wonderful. So coming back to it, तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के. मैंने गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट्स की हमने हिस्ट्री भी डिस्कस की और किस तरह दुनिया का फोकस गुड गवर्नेंस पे आया उसको डिस्कस किया. Let's begin to write a few lines about good governance and the framework per se. Just give me a minute. Yes. Did I get you to write a few definitions of governance? Not good governance, but governance.
Oh. Can't you guys hear me? Can't you guys hear me? Yes, okay. Somebody said no voice. So I probably because I was quiet for a minute or so. Is that because Naveed Iqbal Sahab, you could not hear me or you can't hear me? Okay, he left. He left the chat. Okay. Okay, wonderful. Okay, so coming back to it, जरा सुनिए इस बात को गौर से, बहुत अहम बात है कि वर्ल्ड बैंक वाले जो मैंने डेफिनेशन लास्ट टाइम शायद लिखवाई भी थी, वर्ल्ड गुड गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क था उसके मोजिद जो थे, the pioneer was the World Bank, and of course other than bodies might have made nomenclatural adjustments to it, nomenclatural modifications to it, but no one dared to go beyond those nomenclatural modifications, and therefore the entire framework was preserved and is preserved to date in the form of what it originally was in the 90s. And what it originally was, we would look at that in a short while. But let's begin with the definition. I think we already wrote this definition. So when the World Bank gave this framework, it defined all of these 6 indicators or 6 dimensions and what these would include and what these would not include. And so what we usually do is, what I've done is that I would get you to write a single line for most of these, which is the line that I just, for your easy understanding of what the indicator is, that I put them right in I get you to write them right at the front. But those are my own lines on how I explain the indicator. And then I get you to write that formal sentence which the World Bank has included in its original documents. You know what I mean? So you know both the things. So you could write about these indicators in your own words as well, which could be my words or your own words, and then reproduce something which the World Bank originally writes in its documents about, what each of these indicators is. So let's begin by a formal definition of governance, and then get to each of these indicators one by one. And so get your pens ready, your notebooks ready, because we'd be doing some good amount of writing. और साथ साथ मैं समझाता जाऊंगा, अगर सवाल हैं तो कोशिश कीजिए कि हम जो सवालों की ब्रेक लेंगे उसमें पूछें, लेकिन साथ साथ आप जंप करना चाहें तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो साथ ही जंप भी कर सकते हैं. Okay, let's begin with the definition of governance. I think this is the same definition that we wrote the other day, so you don't need to put that down again if you wrote this. Governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. And this is the definition that World Bank gave in the year 1992. And you could see these timelines that, the focus on governance or focus towards governance began to shift in the early 90s. World Bank had to define governance as in the year 1992, which means that somebody like the World Bank giving a definition means that a credible definition did not exist prior to that. Or if it did, of course, it wasn't a consensus definition. People disagreed with it. So therefore, the World Bank had to jump in and tell the world that this is how governance is defined. That tells you that governance is a very millennial concept. Right? People born after 1988, I think, or 1986 or 85 or something, are called millennials. And it's a very millennial, very millennial concept. So then let's begin by writing 3 points. Governance, likhiye, governance comprises the traditions and institutions, both the traditions and institutions. और ये जो तफरीक है traditions और institutions, इसको याद रखिएगा कि tradition से यहाँ पे हमारा मतलब है
The informal sector, tradition, culture, वो भी गवर्नेंस का हिस्सा है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जब गवर्न करना है तो उन्होंने ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल एंड सोशल ethos उनको भी कंट्रोल करना है. And then, of course, they have to govern the institutions. This is why World Bank is writing about both of those things. The informal and the formal. Institutions are formalized structures, traditions, cultures, beliefs. This is, of course, the rather informal side of governance. So governance comprises the traditions and institutions by which authority is exercised in a country. Put very, very simply. Now, जो मैंने पहले 92 वाली definition narrate की है, उसी को आगे वो explain कर रहा है. Governance comprises the traditions and institutions by which authority is exercised in a country. आगे full stop के बाद देखिए, it would include, number one, it would include, and I'm quoting the World Bank verbatim here, it will include, this includes, number one, the process, this includes के बाद कॉलन डालिए और निचली लाइन में पहला पॉइंट लिखिए, the process by which governments are selected, monitored and replaced. The process by which governments are selected, monitored and replaced. Number two, the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies. The capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies. Number three, the respect. दो तक लिख लिया सबने? Point 2 तक लिख लिया सबने? Point 3 है the respect of citizens and the state for institutions that govern economic and social interaction among them. The respect of citizens and the state for institutions that govern economic and social interaction among them. The respect of citizens and the state for institutions that govern economic and social interaction among them. यहां तक सबको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया? हम आगे चलें. मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके वैसे एक्सप्लेन भी कर देता हूं. वैसे तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिंपल पॉइंट्स हैं, बट आई कैन जस्ट just briefly talk about these. The first, of course, is the process by which governments are selected, monitored, and replaced. So this is your basically governance in the first instance. इसके आगे आप bracket में लिख सकते हैं. यहाँ पे वो electoral process की बात कर रहे हैं. How governments क्या function करती हैं वो तो governance है, पर governments install कैसे होती हैं उसी process से
this governance is a very all encompassing term, और ये मैंने शुरू में पहले लेक्चर में ये बात कही थी. तो वो गवर्नेंस की इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट्स कैसे इंस्टॉल होंगे, वहां वो प्रोसेस इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस. कि आपकी कितनी इलेक्टोरल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा है, इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी कितनी ज्यादा है, इलेक्टोरल सिस्टम कितना एफिशिएंट है. तो पहला पॉइंट तो सिर्फ आपकी इलेक्टोरल सिस्टम की बात करता है. बल्कि आप जानते हैं कि काफी लोग गवर्नेंस को सिर्फ यही समझते हैं कि आपके वोटिंग प्रोसीजर्स कितने ट्रांसपेरेंट हैं, वोटिंग प्रोसीजर्स कितने इफेक्टिव हैं, और कितने अच्छे तरीके से आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जमहूरियत को भी खाली वोट डालने का प्रोसेस और गवर्नमेंट्स को इंस्टॉल करने का प्रोसेस समझते हैं. तो इसलिए दिस फैसेट ऑफ गवर्नेंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल. Second is the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies. अब again इसमें भी आप देखिए कि दो बातें की है. एक तरफ है फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज और एक तरफ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. आप जानते हैं शायद इसके ऊपर बात नहीं हुई थी, याद रखिए कि अगर कोई पॉलिसी अपने आउटकम्स नहीं अचीव कर पा रही, लेट्स इमेजिन एजुकेशन पॉलिसी और उसके आउटकम है इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, अगर वो नहीं अचीव कर पाई 10 साल बाद या 15 साल बाद, जो भी उसका टाइम टू मैच्योरिटी था, तो उसमें जब उसका आप डायग्नोस्टिक्स करोगे तो पॉलिसी के अंदर दो इश्यूज होंगे. या तो उस पॉलिसी को जब डिजाइन किया गया उसमें किन रिसोर्सेस को देखते हुए आपने क्या क्या आउटकम्स रखे, शायद आपने बहुत रिसोर्सेस को, जितने अवेलेबल रिसोर्सेस थे उनको देखते हुए बहुत एम्बिशियस टारगेट्स उस पॉलिसी में रख दिए, इसलिए वो अचीव नहीं हो सकी. या टारगेट्स एम्बिशियस नहीं थे, यानी इसका मतलब है कोई डिजाइन का फॉल्ट नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट था, क्योंकि जब आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो उतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके. तो यूजुअली पॉलिसीज की जब बात आती है तो उसमें दो ही मामला होते हैं, या तो डिजाइन फॉल्ट होता है या इम्प्लीमेंटेशन फॉल्ट होता है. तो पॉलिसी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग. तो पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है और जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, वो दोनों, बोथ ऑफ देम आर गवर्नेंस मैटर्स, आर गवर्नेंस इश्यूज. इसलिए हमने गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन में उनको शामिल किया. एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ कोर्स इज द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजंस एंड द स्टेट फॉर इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरैक्शंस अमंग देम. अब तीसरे पॉइंट का यहाँ ये मतलब है, तीसरे पॉइंट का यहाँ ये मतलब है कि जो आपकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है, जिसके बारे में डगलस नॉर्थ ने भी बात की, कि आप इंस्टीट्यूशनल सुप्रेमेसी इंश्योर करो. यहाँ पे स्टेट या सिटीजन्स से एक बड़ी एंटिटी, उन्होंने सुपर एंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको कह रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस. आप यू बिगिन टू रिस्पेक्ट योर स्टेट इंस्टीट्यूशंस. सो इसको आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस तभी इनेबल होती है जब इंस्टीट्यूशनल सुप्रेमेसी, यू वायर द इंस्टीट्यूशंस विद इन दैट लार्जर सिस्टम, और उनको आप इंस्टीट्यूशंस को इतना अच्छा स्ट्रांगली पोजीशन और प्लेस करो कि उनकी सुप्रेमेसी इंश्योर की जा सके. ये दैट्स हाउ बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन दिस. जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप एफबीआर की इंस्टीट्यूशनल सुप्रेमेसी नहीं इंश्योर करोगे तो कोई उनको टैक्स नहीं पे करेगा. वो एफबीआर के पास वो मॉरल लीगल स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो दे वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल. इफ दे आर इक्विप्ड विद दोस मॉरल एंड लीगल टूल्स, लीगल से मतलब है कि वो सैंक्शन कर सके नॉन टैक्स पेयर्स को, तो दे विल बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस. तो तीसरी डिबेट है यही. तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ऑल इनकम्पसिंग किस्म की गवर्नेंस की तरफ, उन 6 इंडिकेटर्स की तरफ, उन 6 डायमेंशंस की तरफ, उन 6 प्रिंसिपल्स की तरफ. सबसे पहला है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी. यू जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी get my papers in line as well.
वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके नीचे लिखिए अंडर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, दिस इज द फर्स्ट लाइन, अंडर democratic societies, and I'm emphasizing on the word democratic here because it's a very sort of democratic inclination. Under democratic societies, comma, all citizens who all citizens who are subjected to the policies and decisions of the government, all citizens who are subjected to the policies and decisions of the government must have a voice in making those decisions. All citizens who are subjected to the policies and decisions of the government must have a voice in making those decisions. Full stop. This implies that democracies must be और ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा अभी क्लास के बाद एंड ऑफ द क्लास पे, तो वो उसमें ये सब बातें इंक्लूडेड हैं. तो आई यूजुअली चेंज अ फ्यू थिंग्स हर नए बैच के साथ, लेकिन मेजॉरिटी चीजें वही होंगी जो आपको नोट्स में नजर आ रही. कुछ टॉपिक्स में कुछ चीजें मैं चेंज करके बोलता जाऊंगा, पर यहाँ पे मेजॉरिटी ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो पिछले 25 साल से बिल्कुल सेम हैं, और इनके अंदर बहुत ज्यादा आपको चेंजेस, नोट्स में से जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे. तो इसलिए अगर आप में से कोई पीछे भी रह जाता है या नहीं लिख पाता, तो ये तसल्ली रखिएगा कि आपको सारे नोट्स क्लास के एंड पे मिल जाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो लिखवा रहा होता हूँ नोट से, पुराने नोट्स जो पिछले बैचेस को मैंने लिखवा था उससे थोड़ा सा अक्सर डिफरेंट होता है, काफी चीजें इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो ये अक्सर मैं कॉन्सेप्ट इवॉल्व नहीं हुआ होता, मैं किसी और वर्ड्स में लिखवा देता हूँ. इट मीन्स द सेम थिंग बट मे बी इन डिफरेंट वर्ड्स. तो वो आप लोग साथ साथ लिखते जाने कीजिए. तो तब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा उससे शायद ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट आज वाला लेक्चर जो है वो वुड बी मोर और लेस द सेम व्हाट इट इज इन द नोट्स. Okay, so this implies that democracies must be participatory in nature. This implies that democracies must be participatory in nature, comma, must be participatory in nature, inviting participation from all those impacted by the policies. यानी जो भी स्टेट के अंदर पब्लिक पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है या जो भी स्टेट पॉलिसीज हैं, उनमें हमने इंक्लूसिविटी और पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है. वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल पीपल have a voice in making those policies that impact their lives. And this is more so the case in the democratic societies, where governments are representative governments because people vote them in. And when people vote them in, they become representatives of all those people. And therefore, indirectly, all of those people have a voice in the policies that they make. I hope this is understood. Right, which is why I kept emphasizing on the word democratic. Full stop के बाद आगे लिखिए, such voice should be provided without any discrimination and prejudice of race, religion, caste and culture. Without any discrimination and prejudice of race, religion, caste, and culture. Full stop. Now, this is what हमने अपने जो उर्दू जुबान में कहते हैं ना, अपने पल्ले से जो लिखा है ये वो है. But World Bank also gives the good governance framework जो ओरिजिनल था वो क्या किन लाइंस में इसको डिफाइन करता है.
नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लिखिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमने रोका था। अब जो वर्ल्ड बैंक कहता है उसके बारे में आगे एक दो लाइन्स। The voice and accountability indicator captures perceptions of the extent. The voice and accountability indicator captures perceptions of the extent to which a country's citizens are able to participate. Captures perceptions of the extent to which a country's citizens are able to participate. अब वॉइस किन किन जगहों पे वॉइस होगी वो वर्ल्ड बैंक वाले इसी में बता रहे हैं। इन विच अ कंट्री सिटीजंस आर एबल टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट, एक तो ये वॉइस है, एबल टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट, एज वेल एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, participate in selecting their government, as well as freedom of expression, comma, freedom of association, freedom of expression, freedom of association, and a free media. That is also very important because that is where people express their voices and where these journalists express their voices. So one attribute of all developing countries that were suffering with this menace of bad governance was that they were suppressing the voice of their journalists. They did not have a free media, as was the case in most communist countries. बल्कि रशिया में आज भी ऐसा हो रहा है, चाइना में आज भी ऐसा हो रहा है, that there is suppression of free media. People cannot express their sentiments, especially about the state. Okay, moving on. अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर। वॉइस की यहाँ पे बात की गई इन सेलेक्टिंग अ गवर्नमेंट, फिर वॉइस की यहाँ पे बात की गई इन प्रोवाइडिंग पीपल in having the right to freedom of expression and freedom of association, and then lastly was this free media. एक बात याद रखिएगा, इस गुड गवर्नेंस की डायमेंशन को वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी क्यों कहा गया? बिकॉज इफ पीपल हैव अ वॉइस और अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। इफ पीपल हैव अ वॉइस, then they could use that voice to make those at the helm of affairs accountable. जब लोगों की जिन सोसाइटीज में, जैसे मैंने चाइना रशिया की एग्जांपल दी, ऑप्रेसिव सोसाइटी थी, नाजी जर्मनी जो फाशिस्ट सोसाइटीज थी, वहां there was no freedom of expression, there was no freedom of association. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से क्या मतलब है कि जो रूलिंग स्टेट पार्टी थी, क्या आप एसोसिएट हो सकते थे विद फ्री विल with another political party, say in the Nazi Germany? No, if you did that, you were totally exterminated. You were wiped off. So there was no freedom, and that began to cause resentments in the people. People began to disown policies of the government, and then, of course, that resentment led to violence and political instability, which ultimately brought those states down. Which is why the world now agrees that on one hand, this is pathway to good governance, but on the other hand, giving people voices to
take their frustrations out and also hold those in the public offices account, using those voices to hold those in the public offices accountable for their deeds is a very, very, on one part, it's a good governance indicator, but on the other, it is also a very, very good survival tactic. Because if you don't allow these things, resentments and frustrations keep boiling to a point where, ultimately they begin to disintegrate and cripple states. And we've seen how that happened in Yugoslavia, how that happened in USSR, where these apart from these internal rivalries, which led to a lot of violence, there's also this suppression of voices. And states must not suppress voices. That adds to their longevity. कि states की जिंदगी लंबी हो जाती है. शायद USSR आज भी एग्जिस्ट करता अगर वो सप्रेशन ना करते. और जब 1980s में क्रुश्चेव के दौर में जब ये जाने वाले थे उस तरफ रेवोल्यूशन की तरफ, तो उस वक्त सबसे बड़ा चेंज जो यूएसएसआर में आ रहा था वो था, और वही चेंज लेकर भी आया अल्टीमेटली, कि फ्री मीडिया प्रोलिफरेट होना शुरू हो गया था. और मीडिया ने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल भी करना शुरू कर दिया. दे बिगैन टू शो देयर मिसडीड्स, एंड दैट रेज्ड द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन and level of distrust in the government, which ultimately disintegrated the USSR. So just one example of that. But what you need to understand is that voice and accountability are very, very strongly interrelated. And not only are they good governance indicators, but also survival tactics for the state to provide people a free media, allow them to express their voices and their opinions, and then include those voices and their opinions when they make public policies. अब आप देखिए, जब डिक्टेटरशिप्स आती हैं तो बैड गवर्नेंस क्यों होती है? इसलिए होती है मीडिया को सप्रेस किया जाता है, गवर्नमेंट डिक्टेटर्स पपेट गवर्नमेंट्स लाते हैं तो लोगों को वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं, लोग गवर्नमेंट भी सिलेक्ट करते हैं. फिर उस दौरान क्रैक डाउन किया जाता है उन एसोसिएशंस में या पॉलिटिकल पार्टीज पे विच आर एंटी डिक्टेटरशिप, और उनको एंटी स्टेट लेबल किया जाता है. इट हैपेंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी नहीं होती. तो जैसे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक एहरा में होता था, यू कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड अबाउट ज़ियाउल हक, अदरवाइज यू वर जेल्ड. सो देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. In fact, when General Pervez Musharraf came to power, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, you could use this as an example. He was cognizant of these good governance parameters, and he laid a very, very good large focus on ensuring good governance. आपको शायद याद हो कि पाकिस्तान में जो 100 चैनल्स बने, इन सबके लाइसेंसेस एक मिलिट्री डिक्टेटर ने दिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने नहीं दिए. Because he was so cognizant of the fact कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स गलती करते हैं मैं वो ना करूं, तो उसने unnecessarily, बल्कि to the point of doing this unnecessarily, उसने लाइसेंसेस इशू करना शुरू कर दिए नए टीवी चैनल्स को. और and at one point in time Pakistan had 140-150 operational TV channels. So free media proliferation हुई, काफी हद तक people expressed their voices against Musharraf on the media. The media was also holding his government accountable, and he was, हाँ, जियो पे पाबंदी लगी उस दौर में, लाल मस्जिद के इंसिडेंट पे, several other times. पर तो मीडिया की वॉइसेस को कहीं ना कहीं कर्ब भी करने की कोशिश की गई. But for the most part of Musharraf's military dictatorship, I think his record as somebody who allowed freedom of expression and so on and so forth was very unblemished, largely unblemished. Apart from these one or two incidences, he allowed free media, and he allowed media to proliferate. In fact, he pioneered Pakistan's media industry, electronic media industry. So, and he was a military dictator. So not necessarily, these are not only things that democracies do around the world,
if a dictator is cognizant of the fact that it has to provide freedom of expression, of course dictators के लिए मुश्किल होता है कि वो ये चीज प्रोवाइड करें कि लोग गवर्नमेंट्स खुद सिलेक्ट करें, बिकॉज वो किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू तो नहीं आते, लेकिन वो बाकी चीजें इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच ऑफ कोर्स जनरल परवेज मुशर्रफ tried to do during his years at the president office. Of course, to legitimize their undemocratic rule, or if not legitimize, I would rather say that to create some sort of credibility of their rule, which is and to of course become popular within the people. This was a very, at that time, was considered a very populist tactic of the Musharraf regime to allow this proliferation in India. And he, I think, it's a political comment, not directly related to GPP, but he for a lot of time thought that this media he was creating would because he's given them certain concessions and certain allowances. He thought that it would be a media which would be free on one end, but on the other hand, would be a media that would be loyal to him because he allowed them this space which never existed before. But such is the nature of journalism and media, that they usually bite the hand that feeds them. So they very, very quickly, but then of course they have to work in the public interest. And whenever public interest was harmed during Musharraf's era, they raised those issues and raised their voice. And of course that often brought the Musharraf regime and the media at loggerheads with each other, at the opposing ends of the spectrum. And that happened several times over. Anyways, so that being said, just remember that voice and accountability are very, very strongly interlinked. If you allow people voices, they would hold those in the public offices accountable for their deeds, for the policies that they make and how they implement those policies, but also for these 4 areas on whether they have the freedom to select their government, freedom of expression, freedom of association, whether a free media exists in the first place. So let's move to the second point. I hope this is well understood. The second point is political stability and absence of violence. Political stability and absence of violence. इसमें पहली लाइन लिखी है, the law must prevail. The law must prevail over any cultural. The law must prevail over any cultural, ethical or religious considerations. The law must prevail over any cultural, ethical or religious considerations. Political stability. Oh, no, sorry. Okay, no. Okay, cut the first line. I'm so sorry. Even in the notes, it is wrongly placed. This first line in the notes is wrongly placed. I said political stability and absence of violence, and this first line belongs to the rule of law indicator. इसको बेशक आप rule of law के अंदर दोबारा reproduce कर दीजिएगा. The law must prevail. Political stability and absence of violence को यहाँ से लिखना शुरू कीजिए. Political stability is essential. Political stability is essential
For the consistency, political stability is essential. For the consistency and continuity of government policy. Full stop. We saw full stop के बाद लिखिए we saw that the world entered into an era. We saw that the world entered into an era of religious extremism. The world entered into an era of religious extremism and asymmetric warfare. Religious extremism and asymmetric warfare. Following the twin attacks on the World Trade Center in 2001, on 9/11, following the twin attacks on the World Trade Center on 9/11. Bracket में इसके आगे लिख दीजिए. Example is turmoil in the Muslim world and the growth of ISIS. Example is turmoil in the Muslim world and growth of ISIS. ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. And the growth of ISIS. Bracket close, full stop. The growth and development of states. Growth and development of states is dependent upon ensuring political stability. Full stop. Full stop. However, political stability and absence of violence cannot be achieved. However, political stability and absence of violence cannot be achieved if the law is not respected and if the law is not respected and effectively implemented. अब पाकिस्तान में इसकी बेइंतहा मिसालें हैं कि कहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ वायलेंस की वजह से ग्रोथ इम्पैक्ट हुई, डेवलपमेंट इम्पैक्ट हुई. जैसे 2014 में मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी.
political parties were on the road. Dharnas were happening across the country. And they happened because of another good governance indicator, which is control of corruption. A government was unstable, shaky, at the verge of being dismantled and taken out. That impacted growth, that impacted development. Let's take another example. What happened during the 90s? Governments did not complete their tenure, which is another example of political instability that often culminated into violence, but also Pakistan's growth suffered, development suffered, because there was lack of continuity in policies. Institutions became accustomed to certain type of policies and became accustomed to a certain way of working of a certain government. But soon after that happened, the government got overthrown before finishing its term. Happened twice with Benazir Bhutto in the 90s and twice with Mia Nawaz Sharif in the 90s. जी चलें आगे. चलें, let's take a short break here, 10-15 minutes. Let's come back. जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले. If you need to do something else, it's 4:05. So let's come back 4:15, 4:20ish, and then let's continue this until 5:30. Rule of law से हम वापस 4:20 it is then. Okay, wonderful, sir. Thank you then, sir. Thank you, sir. Thank you. Successfully reconvened. All of us are back. Okay, rule of law. अच्छा, political stability में एक अहम बात बस ज़हन में रखिए कि stability का ताल्लुक एक तो उसका aspect है violence, absence of violence वाला. That when there is of course no absence of violence, there is political stability. Look at those countries in sub-Saharan Africa or the entire underdeveloped region of Africa. There is immense amount of violence, and those countries, as Ishrat Hussain Sahab calls it, have become. There is not just bad governance in those countries. Those countries have gone on to become ungovernable, as Ishrat Hussain Sahab calls it. Absolutely ungovernable. And why that has happened? That has happened only because of absence of, has only happened because of violence. क्योंकि वो मुल्क, वो ममालिक absence of violence नहीं ensure कर पाए. अब वो violence जो है, वो जो ethnic conflicts है, civil wars है, now they are reflected in all spheres of their governance. Reflected in all spheres of their governance. And that has, of course, bad governance in turn has impacted growth and development and so on and so forth. Anyways, coming back to this important critical point on political stability. तो एक side तो political stability की है कि जब violence होगी तो automatically political instability cause होगी.
एक ऐसा वायलेंस होगी या कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे मैंने 2014 के धरनास की एग्जांपल दी, जिसको सिटिंग गवर्नमेंट देन ऑफ कोर्स ब्लेम्स इट फॉर देयर delayed negotiations of the China-Pak economic corridor, which was thought of as being a project central to Pakistan's future development plans, and thought of as being a very transformative project. But some of those plans were also being so. Governance in times of political instability becomes in times of violence becomes very, very difficult. It puts a strain. Violence puts a strain on government resources, and it tests the government's ability to govern. But apart from this violence concept, political stability, जब हम बार बार कहते हैं ना कि political instability है, instability है, तो इसका एक major ताल्लुक ये है कि governments क्या अपनी term complete कर पाती है, जो हमने 90s में देखा कि बार बार ऐसा नहीं हो पाया कि governments ने अपनी term complete की हो. तो political instability का बहुत ज़्यादा ताल्लुक political uncertainty से है. When you do not know the future, when you do not know the future, you cannot effectively and convincingly plan for the future, right? आप policies के अंदर एक policy inconsistency और policy discontinuity आती है. Policy inconsistency और policy discontinuity आती है, which of course has a bearing on growth and development and so on and so forth. So which is in itself a huge governance issue. And that is caused purely by, that is a pure manifestation of political instability. क्योंकि हम political differences के ऊपर governments in the 90s were toppled one after another. And institutions became accustomed to dealing with a certain type of government. और 2 साल बाद वो government change हो जाती थी. The next 18 months you would have a new government. The institutions, the state infrastructure, public officials got used to of dealing with a new government, and then it also got changed. The policy inconsistency की जो costs है, that are very, very high, because you implement a policy, you incur very, very large costs to, sort of restructure your institutions and reorient your institutions towards the implementation or adoption of a certain new policy. But in the next and that policy has to be there for 5 years or 10 years, medium term, long term, and so on and so forth. But in just 18 months, the government changes, the new government comes in, and then, of course, a new policy is roped in, is ushered in, which, of course, has a large bearing on governance, but also, of course, on the financial resources of the government. So, uski costs, financial costs, bhi bahut high hai of policy inconsistency, or that has a bearing on governance and growth and development of nations. So, ये एक important factor है कि political instability कैसे manifest होती है. तो उसका एक ताल्लुक ये political uncertainty वाला है, लेकिन दूसरी side जो उसकी है वो political uncertainty की वजह से policy inconsistency and so on and so forth, और दूसरी side उसकी वो violence वाली है, जहां political instability manifest होती है in the different forms of violence. I hope this is understood. आगे rule of law की तरफ चलते हैं. मैंने एक लाइन लिखवाई थी कुछ देर पहले कि law must prevail over all social, religious, cultural
जो भी कंसिडरेशंस। इसमें एक बात याद रखिएगा कि स्पेशली विद इन सोसाइटीज विच आर वेरी वेरी डाइवर्स, बहुत सारे रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, वेरियस कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, एंड सेवरल अदर थिंग्स। उस तरह की सोसाइटीज में अहम है, बहुत अहम बात है कि अहम ये है उन सोसाइटीज में कि एक कॉमन डिनोमिनेटर हो जिसपे सबका एतकाद हो, सब उसमें बिलीव करते हो। वो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है सोसाइटीज में? वो यूजुअली कानून होता है, लॉज ऑफ द स्टेट, and they must prevail over all other considerations. They must prevail over all other differences. They must prevail over all other affiliations, चाहे वो religious affiliations हो, cultural हो, so on and so on. So you could affiliate with any group, whether it be a religious group, whether it be a cultural group. बात याद रखिए, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ ताकि रूल ऑफ लॉ से हमारा यहाँ क्या मतलब है वो, और रूल ऑफ लॉ कैसे गवर्नेंस बेहतर करता है वो आपको समझ आ सके। कि एक सिंधी भाई की की एथनिक अफिलिएशन ये है कि वो सिंधी है, उसकी एथनिक आइडेंटिटी ये है कि वो सिंधी है। शायद वो जो मजहब फॉलो करता हो वो हिंदुइज्म हो, सिंध, lives somewhere in घोटकी से, and he's a हिंदू। उसका उस इलाके का कोई लोकल कल्चर विद द नेम एक्स, आई डोंट नो व्हाट कल्चर, वो उस कल्चर को फॉलो करता है। That there is myself sitting in Islamabad somewhere, and I am a Punjabi, and I speak a different language maybe. I am a Muslim. I have a very, very different identity. Then somebody sitting in KP is a Pashtun. Pashtun identities belongs to the Pashtun ethnicity. Speaks Pashto, speaks a different language. Is a Christian, say. So also has a different religious outlook. तो इन तीन लोगों के दरमियान अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों में से किसके मजहब के मुताबिक रिजॉल्व होगा? क्योंकि तीनों के मजाहिब, इवन दो विद several similarities in the base, may say a different thing on that matter, may have a different opinion on that matter. तो फिर किसका रिलीजन सुप्रीम समझा जाएगा to resolve that conflict? The Christian would say that what I've done is exactly in line with the prescriptions of my religion. Hindu would say कि मैंने तो जी अपने रिलीजन के मुताबिक ठीक किया, मुसलमान कहेगा मैंने अपने के मुताबिक ठीक किया। तो कॉन्फ्लिक्ट में सेटलमेंट कैसे होगी? ब्लेम आप कैसे फिक्सेट करोगे? आप नहीं कर सकते। तो वहां पे दुनिया को कवानीन की जरूरत पड़ी। अच्छा, तीनों का कल्चर अलग अलग है, तो तीनों कहेंगे मैंने जो किया वो मैंने, मेरे कल्चर में तो ऐसे ही होता है। किसका कल्चर सुप्रीम होगा, किसका कल्चर प्रिवेल करेगा? अगेन, सोसाइटीज में जितने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती है, तो चूंकि इंटर रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंटैरिटी है हमारे सब गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स में, तो आप लोग ये बात देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अगर ethnic conflict, religious conflict होता है, तो that would cause political instability. And to make sure that that situation does not arise, what the man in the prehistoric times tried to do was that it came up with laws that binded the society together. The laws became a binding force, and they became a binding force was because even in very diverse and secular societies, which were extreme, and this is a very important statement I'm going to make, that the more diverse you are, the more vulnerable you become to disintegration. But even in those societies, laws became that binding force.
But states had to ensure another thing, which was that there was rule of law. The law did exist on paper, but the implementation, the adoption, and the following of that law had to be ensured by state authorities. And of course, they could do it through better means of governance, as we speak about that today. तो रूल ऑफ लॉ यही है कि उसकी सर्विस ये है कि वो एक बाइंडिंग फोर्स बनता है even in diverse and secular societies. And it acts, it functions like a common denominator. And therefore, the only way it could become a common denominator is that it must prevail over any cultural, social, and religious considerations. This is very, very important. And without rule of law, absolutely, there is absolute no governance. There is no concept of good governance without rule of law. So let's write a few more lines about rule of law. So what does the law govern? And I'd get you to write a line about that. It's very, very important. Now, there are laws that govern transactions between people themselves, and then transactions between the people and the state. तो दो किस्म के कवानीन है ना हमने जिसमें अक्सर जो लोगों के और स्टेट के दरमियान के इंटरैक्शंस को गवर्न करता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहते हैं. And then there is law that governs transactions between people. अब वो ट्रांजैक्शन किसी क्रिमिनल नेचर की ऑफेंस को भी अराइज कर सकती है. वो ट्रांजैक्शन किसी सिविल नेचर के ऑफेंस को भी अराइज कर सकती है. वो ट्रांजैक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के लीगल मैटर को भी अराइज कर सकती है. Any transaction between people and transactions between people and the state. जब people and the state है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है. Because often people feel that the state is diverging from the constitution. They could hold it accountable under the constitutional law. And same, of course, goes for certain institutions. And same, of course, goes for other people. तो मुख्तलिफ लॉ के factions हैं. तो ये लिखिए बात that transactions between people and those between people and the state, transactions between people and those between the people and the state, transactions between people and those between the people and the state, number one, must be governed by law. Must be governed by law. Number two, must happen under the auspices of law. यानी law की कानून की छतरी के नीचे होना चाहिए. Must happen under the auspices of the law. And third, within the limitations of the law. So one quality of law is that it helps set boundaries on what is acceptable behavior within a society and what is not. And that, of course, those boundaries then set limitations. क्या acceptable behavior है जिससे आप beyond नहीं जा सकते. So that is why I talk about limitations separately. So these transactions between the people and, of course, transactions between people and the state have to be governed by the law, have to be under the auspices of the law, and within the limitations, the boundaries set by the law. आगे चंद लाइनें और लिखिए.
The idea of good governance must include, must include, must include free and easy access to justice. The idea of good governance must include free and easy access to justice as a precursor, as a precursor to rule of law. अगर easy और free access to justice होगा और ये दोनों governance की बातें हैं, automatically rule of law ensure होगा और rule of law ensure होगा तो फिर वो एक it's a cyclical relationship. एक चीज दूसरी में contribute करती है. अगर free और easy access to justice होगा जो कि in themselves governance है जो स्टेट ने इंश्योर करनी है कि फ्री और इजी एक्सेस टू जस्टिस हो थ्रू गुड गवर्नेंस तो ऑटोमेटिकली रूल ऑफ लॉ होगा और रूल ऑफ लॉ होगा तो गुड गवर्नेंस को भी इंश्योर हो जाएगी सो इट्स अ साइक्लिकल relationship. The idea of good governance must therefore include free and easy access to justice as a precursor to rule of law. Full stop. This means, आगे लिखिए, this means that the supremacy of law, this means that the supremacy of law is incomplete. This means that the supremacy of law is incomplete if those who are the subject of the law. This means that the supremacy of law is incomplete if those who are the subject of the law and its ultimate beneficiaries do not have access to it. Supremacy of law is incomplete if those who are the subject of the law and its ultimate beneficiaries do not have access to it. So there are people who are marginalized, who are victims of oppression, of injustice. Those are the people who should be the ultimate beneficiaries of the implementation of the law. It's a pity that those who are subjected to the law and those who benefit from it, the marginalized groups, the victimized people, do not have access to it. It would be a pity. World Bank इसके बारे में क्या कहता है? In very formal World Bankish language, let's write a line about that. Full stop के बाद लिखिए, rule of law is the extent to which agents have confidence and abide by the rules of society. Rule of law is the extent to which agents have confidence and abide by the rules of society, and in particular, quality of contract enforcement, property rights, कॉमे के बाद लिखिएगा, quality of contract enforcement, comma, property rights, comma, the police, comma, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence, as well as the likelihood of crime and violence that are interdependent, and the likelihood of crime and violence that are interdependent. So this is a very important perspective in the sense that, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में बात 3 या 4 चीजों की अगेन हो रही है. एक ताल्लुक है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, प्रॉपर्टी राइट्स. तो यहाँ पे 2 फंक्शंस जो रूल ऑफ लॉ ने बड़े फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो ये है कि पीपल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड that it has to ensure
that contracts are enforced and people get their property rights. तो यहाँ दो तो फंक्शनल किस्म के एस्पेक्ट्स हैं रूल ऑफ लॉ के, जो दो फंक्शंस रूल ऑफ लॉ ने परफॉर्म करने हैं, और दो उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं. अगर आप इस डेफिनेशन को इसको डिकोड करें तो दो उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, और दो उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें वो इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, पुलिस की, कोर्ट्स की. दो इंस्टीट्यूशन है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है और कोर्ट्स. तो यहाँ जब वो उसी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में डिस्कस करता है रूल ऑफ लॉ को, तो उसमें एक रोल ऑटोमेटिकली कार्व आउट हो जाता है फॉर द पुलिस एंड द कोर्ट्स टू परफॉर्म. तो इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो चार बातें यहाँ की गई उसमें दो इदारे और दो अदरवाइज जो कोर्ट्स ने राइट्स इंश्योर करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का और प्रॉपर्टी राइट्स, उन दोनों का इस डेफिनेशन में तस्करा किया गया है. तो यहाँ क्लियरली बताया गया है कि अगर स्टेट्स ये चारों चीजें इंश्योर करती हैं, जैसे पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस रिफॉर्म्स इंश्योर होते हैं और पुलिस लॉ की डिस्पेंसेशन की तरफ काम करने लग जाते हैं. कोर्ट्स स्पीडी जस्टिस, टाइमली जस्टिस देना शुरू कर देते हैं, और साथ साथ प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड. ऑटोमेटिकली रूल ऑफ लॉ होगा. तो वर्ल्ड बैंक इसको इन चार चीजों की बेसिस पे रूल ऑफ लॉ को डिफाइन कर रहा है. हाउ लॉ वुड बिकम सुप्रीम, आप रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कैसे इंश्योर कर सकते हो, बाय डूइंग दिस फोर थिंग्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. नेक्स्ट अप is government effectiveness. लिखिए जी, let's get to write a few lines about it. पहले तो ये बताइए कि effectiveness और efficiency में क्या फर्क होता है, बताइए. चले मैं बताता हूँ. इसमें छोटी सी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस की नीचे लिख दीजिए एक साइड पे efficiency versus effectiveness. बड़े लोगों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता. देखिए मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मैं एक एजुकेशन का प्रोग्राम लेकर आता हूं इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, और उस प्रोग्राम के 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक ये कि सिंध में लिटरेसी रेट, प्राइमरी एनरोलमेंट रेट इंक्रीज करे, प्राइमरी एनरोलमेंट रेट इंक्रीज करे, सिंध में न्यूमरेसी स्किल्स और लिटरेसी स्किल्स इंप्रूव हो, सिंध में एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव हो जाए. तो मैं जब ये प्रोग्राम डिजाइन करता हूं तो डिजाइन फेज में मैं इसकी इंटरवेंशंस डिसाइड कर लेता हूं. एक इंटरवेंशन ये है कि एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम सर्टेन रूरल एरियाज में एक बसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करती है गवर्नमेंट. सेकंड, गवर्नमेंट ये करती है कि किताबें फ्री प्रोवाइड कर देती है सब घरों को जहां पे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं. तीसरा ये कि गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को रीवैम्प करती है, फिजिकल रीवैम्प, मिसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. ये 3 इंटरवेंशन गवर्नमेंट उस प्रोग्राम के अंदर करती है. 5 साल का प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है और सब हेल करते हैं. जो भी ऑडिट फर्म्स आती हैं वो आके बताती है, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस होती है उस प्रोग्राम की, वो बताती हैं कि जिन जिन घरों में किताबें पहुंचनी थी और जो क्वालिटी की और जिस तरह की किताबें पहुंचनी थी वैसी ही पहुंची. और यानी इम्प्लीमेंटेशन की अब मैं बात कर रहा हूँ. इफेक्टिव, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया, बच्चों को स्कूल लेके भी आते हैं और फंक्शनिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. फिर स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई, पंखे वंखे लग गए, कैंपस नया बन गया, कुर्सियां आ गई. लेकिन जब 5 साल बाद नंबर्स, डेटा देखा तो ना न्यूमरेसी स्किल्स इंप्रूव हुए, ना लिटरेसी रेट ऊपर गया, ना प्राइमरी एनरोलमेंट रेट ऊपर गया, ना एक्सेस टू एजुकेशन बेहतर.
लेकिन जितने प्रोग्राम के डिजाइन में जो इंटरवेंशंस डिसाइड की गई थी वो सब डिलीवर हुई, लेकिन आउटकम्स, प्रोग्राम आउटकम्स नहीं अचीव हुए। यानी इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन फॉल्ट नहीं था, डिजाइन फॉल्ट था, कि शायद हम जो इंटरवेंशंस कर रहे थे वो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था लिटरेसी रेट से, कोरिलेशन बहुत वीक था। हम उनको अच्छी तरह एफिशिएंटली इंप्लीमेंट तो करते गए, पर वो इफेक्टिव नहीं हो सके। गौर से सुनिए कि ये जो गवर्नमेंट है जिसकी मैंने मिसाल दी है, ये एफिशिएंट तो है क्योंकि उसने स्टेट के रिसोर्सेस को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके लोगों को एक सर्विस डिलीवर कर दी, ट्रांसपोर्ट भी दे दी, मिसिंग फैसिलिटीज भी दे दी, पर वो सर्विसेज जो डिलीवर की गई वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट विद एन ई अचीव नहीं कर सकी। मींस द प्रोग्राम वाज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। और कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन में फॉल्ट्स भी होते हैं, इनएफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन जब इवैल्यूएशन होती है तो वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर चुके होते हैं। वो प्रोग्राम्स इनएफिशिएंट होते हैं लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसकी मैं मिसाल देता हूं कि जब हम फॉर इंस्टेंस पेशावर मेट्रो की एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि जो उसने ट्रैवलिंग कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी है वो शायद जब भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसका डिजायर्ड इफेक्ट, अगर एक ट्रैवल कन्वीनियंस प्रोवाइड करना है तो शायद वो अल्टीमेटली कर दे, इट वुड रीच इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। अब जो मैंने पहली मिसाल दिया ये उसके को टोटली बरक्स एक प्रोग्राम की मिसाल दे रहा है। डिजायर्ड इफेक्ट तो कर दे, लेकिन 10 साल बाद जब आप उसका ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूंकि ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा, इसके अंदर कॉस्ट एस्केलेशन आती रही, तो अल्टीमेटली जितना ये प्रोजेक्ट पे जितना पैसा लगना था हमने उससे 3 टाइम ज्यादा, 4 टाइम ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा पैसा लगा दिया। रिसोर्स वेस्टेज हुई, resources were badly planned. So while we achieved the desired effect, the program was inefficient. अब ये प्रोग्राम इफेक्टिव तो शायद हो जाए लेकिन इनएफिशिएंट होगा क्योंकि रिसोर्सेज वर नॉट यूज्ड विद डिजायर्ड एफिशिएंसी। आपने टाइम रिसोर्स को भी वेस्ट किया और मॉनेटरी फिजिकल रिसोर्सेज को भी वेस्ट किया। अब ये पहले वाली मिसाल के बिल्कुल बरअक्स है। पहले वाली मिसाल क्या थी? जो एफिशिएंसी थी लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं थी। यहाँ इफेक्टिवनेस होगी लेकिन एफिशिएंसी नहीं। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। पूरे डेवलपमेंट सेक्टर में सरकार ने जो प्रोग्राम्स करती हैं उन पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को मरूज़े खातिर लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन गुड गवर्नेंस में वो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एफिशिएंसी इज अ पाथवे, पर अल्टीमेट जो डिजायर्ड इफेक्ट पे रीच करना है गवर्नमेंट्स ने थ्रू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो अगर गवर्नमेंट अचीव करती है, इट्स एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस इंश्योर हो रही है। सो लेट्स राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट। लिखिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझ आ गई, अब कुछ लाइंस लिखते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट डिजाइन प्रोग्राम्स, चलिए ये लिखिए, गवर्नमेंट्स मस्ट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स। Governments must design and implement programs and policies. Governments must design and implement programs and policies in a way that their results match with their objectives. In a way that their results match with their objectives. Full stop. Quite often, at the programs
at the program or policies monitoring or evaluation stages, quite often at the programs और policies से मतलब CIES नहीं मैं कह रहा policy apostrophe S program apostrophe S quite often at the programs or policies monitoring and evaluation stages it is discovered that the results or outputs quite it is discovered that the results and outputs do not match the objectives which is either a design or an implementation fault so therefore full stop के बाद लिखिए so therefore an effective government is one which is able to meet its goals and objectives by also ensuring efficiency in the utilization of human and financial resources. दो ही broad categories होती है ना resources की, यहाँ human resources है, यहाँ आपके financial resources. Least amount of utilizing efficient utilization of human and financial resources. ब्रैकेट में लिख दीजिए resources के बाद resource use efficiency. इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है resource use efficiency. गवर्नमेंट कितना efficiently अपने resources को इस्तेमाल करती है, यानी वेस्टेज ना हो पाए resources में. Resource use efficiency. Bracket close, full stop. आगे चंद लाइन जो वर्ल्ड बैंक ने लिखा रखी है वो लिखते हैं. देखिए गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, अगले पैराग्राफ में गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस कैप्चर्स अब गवर्नमेंट आपकी कितनी इफेक्टिव है उसमें अब कौन से इदारे और क्या फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे वो सब वर्ल्ड बैंक ने एनालिस्ट किए हुए. गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस captures perceptions of the quality of public services, comma, the quality of the civil service, perception, the quality of public services, comma, the quality of the civil service, and the degree of its independence from political pressure, या इसको आप political interference भी कह सकते हैं, from political pressures, comma, the quality of policy formulation, comma, the quality of policy formulation and implementation.
और लास्ट बात देखिए कि एंड द credibility of the government's commitment to such policies and the credibility of the government's commitment to such policies. फुल स्टॉप. गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस को क्लोज कर दीजिए. अगर कोई सवाल है किसी का तो यहाँ जंप इन करके क्विकली पूछ लें. उसके बाद हमने क्विकली बस जस्ट कपल ऑफ लाइंस कंट्रोल ऑफ करप्शन की मैं कभी भी डिटेल्स में नहीं जाता बिकॉज उसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी और वो एक सिनोनिमस टर्म है बैड गवर्नेंस के साथ. यानी ऑटोमेटिकली लोग गुड गवर्नेंस को खाली इंटेग्रिटी या लैक ऑफ करप्शन ही समझते हैं. तो कंट्रोल ऑफ करप्शन इज सिनोनिमस विद गुड गवर्नेंस. तो इसलिए मैं उसकी सिर्फ वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिखवाता हूँ. उसमें फिर पाकिस्तान के आप करप्शन केसेस पैनामा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ यू कैन give out many examples of how lack of integrity, corruption, embezzlement of state funds, imprudent rather, uh, imprudent utilization of public resources, plunder of public resources has caused several governance problems in Pakistan. This is something that you keep covering for current affairs and Pak affairs, so I don't get into. जब मैं गुड गवर्नेंस को पढ़ाता हूँ तो मैं कंट्रोल ऑफ करप्शन की बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता. तो उसमें जो सिर्फ वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है मैं वो आपको लिखवाऊंगा, वही आपको नोट्स में भी मिल जाएगी और आप अपने पास से उसको फिर कंट्रोल ऑफ करप्शन को जितना एक्सपैंड कर सकते हैं विद एग्जांपल्स आप करने की कोशिश कीजिए. देखिए कंट्रोल ऑफ करप्शन के बारे में तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है. कंट्रोल ऑफ करप्शन मैं इसको समझा भी देता हूँ. इज द एक्सटेंट टू विच पब्लिक पावर control of corruption is the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elite and private interests, अब इसमें एक बड़ी अहम जो लास्ट इसकी बात है उसमें एक बड़ी अहम एग्जांपल है जो आपकी आजकल शुगर की रिपोर्ट, शुगर माफिया की एग्जांपल है. how the state has been captured by these elite and private interests of 70 sugar companies जो होल्ड भी कर रही हैं, प्राइस हाइक्स भी, unnecessary प्राइस हाइक्स भी क्रिएट कर रही हैं and so on and so forth. Similarly उसने पूरी डेफिनेशन को बजाय के प्लंडर ऑफ रिसोर्सेज, एम्बेजलमेंट, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लैक ऑफ इंटेग्रिटी. कंट्रोल ऑफ करप्शन का ताल्लुक सिर्फ ये है कि जब आपके पास किसी भी किस्म की सिविल सर्विस के पास, पॉलिटिशियंस के पास कोई पब्लिक पावर है, उसको वो प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल करें. दैट इज करप्शन, दैट इज इट. वो फिर वेरियस फॉर्म्स इख्तियार कर लेती है. और ये जो पूरे अफ्रीकन रीजन में हाई एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ करप्शन है, उसकी वजह ये तीसरी वाली. वहां जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं दे आर एक्सपोर्टेड आउट बाय द एलीट. द एलीट हैज एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज. जैसे ऑयल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी व्हिच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द अफ्रीकन region at very cheap prices, and the only people who benefit from that is top 0.1% of the elite political class that sells the state's resources for their own personal private gain.
which is why those societies are poor, people are malnourished. There's absolutely no resources provided to the people in the form of infrastructure. There's no human development. तो अब जिन भी development indicators की बात करते आ रहे हैं, all of them are equally absent from that region. और उसकी primary वजह यही है that there is a capture of the state by the elites for their private gain. It's very, very important to understand. And of course, the last is regulatory authorities and their quality. अच्छा, regulations और rules और laws इनको हमने पहले सेशन में तफसील से डिस्कस किया था. Regulations का एक मेजर काम ये है कि उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज के हाथों कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करना है फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द कंज्यूमर. तो सरकार खुद तो सर्विस डिलीवरी देती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार ने ये भी इंश्योर करना है कि वो थ्रू इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वो रेगुलेट करे प्राइवेट सेक्टर की भी फंक्शनिंग को, ताकि कंज्यूमर्स थ्रू वेरी हाई टैरिफ्स या अदर एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो सके. और ये रेगुलेशंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है थ्रू रेगुलेटरी बॉडीज जो यूजुअली ऑटोनोमस बॉडीज होती है, क्योंकि उन्होंने रेगुलेशन का काम करना होता है. अब मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ. हर सेक्टर की एक रेगुलेटरी बॉडी है. जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओग्रा है. अब जो ये कल पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोलियम की जो टैरिफ सेट होते हैं वो ओग्रा करती है. जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको लाइसेंसिंग उनकी कौन करती है? जब प्राइवेट कंपनी नई सेटअप होनी है तो उनको लाइसेंस ओग्रा इशू करती है. तो उस लाइसेंसिंग से वो इंश्योर करती है कि सर्टेन टाइप की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही सिर्फ एनलिस्ट हो सके और वो सर्विसेज ऑफर कर सके. सिमिलरली कंज्यूमर को किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, उसकी ओवरसाइट है पेमरा के पास. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि नॉट प्रिंट मीडिया बट इट्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रादर. सॉरी फॉर सेइंग प्रिंट मीडिया. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, PEMRA, पेमरा. क्या कंटेंट दिखाया जाएगा, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ इन लाइन है या नहीं, ये सब फैसले पेमरा करती है. पेमरा रेगुलेट करती है, लाइसेंसेस इशू करती है नए टेलीविजन चैनल्स को. वो पेमरा का काम है. जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मोगरा के केस में कह रहा था वो है, जैसे PSO है, शेल है, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. इनको लाइसेंसेस ओग्रा इशू करती है. जो रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप सेटअप करते हैं उनकी अप्रूवल्स भी ओग्रा के पास होते हैं. तो इस तरह ओग्रा ने अप्रूवल किन रेगुलेशंस की बेसिस पे होगा? वो रेगुलेशंस ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड रिटन रेगुलेशन, कोडिफाइड रेगुलेशंस है हर इदारे की. पेमरा के अंदर क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं, ये भी कोडिफाइड रेगुलेशंस है. जब पेमरा के अलावा एक इदारा मैं इस्लामाबाद में आजकल उसको देखता हूँ, वो पीरा है, पाकिस्तान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, PEIRA, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब जितने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो सरकारी इदारा रेगुलेट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को, ताकि वो एक सर्टेन टाइप का करिकुलम जो सरकार ने अप्रूव किया वो पढ़ाए. फीस क्या चार्ज करेंगे उस पे, बल्कि आपको पता है एक लैंडमार्क जुडिशरी का भी डिसीजन आया. जुडिशरी ने भी अपना रोल प्ले किया और बाद में पीरा को कह दिया कि वो जुडिशरी के उस डिसीजन को एनफोर्स कराए, इंप्लीमेंट करे. तो ये है सारी रेगुलेटरी बॉडीज. तो एक गुड गवर्नेंस ये भी कहा गया कि आपकी फॉर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस कि आप प्राइवेट सेक्टर, बाकी सारी चीजें तो सरकार के
programs, government effectiveness और control government corruption को करे and so on. पर यहाँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो वेरी वेरी लार्ज और उसकी एक्टिविटीज की भी ओवरसाइट और उनको भी सर्कमस्क्राइब करना कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर क्वालिटी इज द सिक्स्थ इंडिकेटर. रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर क्वालिटी, और इसको इसलिए डाला गया कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन कर सके. अब इसके बारे में कुछ बातें लिखिए. Regulations are guidelines on how an individual or an institution should function. Regulations are guidelines on how an individual or an institution should function. So regulations basically govern and circumscribe circumscribe का मतलब कि उसके इर्द गिर्द बाउंड्री सेट कर देती है कि ये कर सकते हैं इदारे, ये चीजें नहीं कर सकते. Govern and circumscribe the administrative and financial working of an institution. Govern and circumscribe the administrative and financial working of an institution. Full stop. It is important to note that many developed countries of the world who also fare well on good governance, countries like the US, for instance, who also fare well on good governance, fare F-A-R-E, fare well on good governance, and are capitalist economic, and are capitalist societies, खाली ये लिख दीजिए, and are capitalist societies. And our capitalist societies provide for a large private sector, provide for a large private sector and promote free private enterprise. Provide for a large private sector and promote free private enterprise. Full stop. Full stop. आगे लिखिए. So the dominant trend in these countries is to favor. So the dominant trend in these countries is to favor deregulations as opposed to regulations. Deregulations as opposed to regulations. However, these are countries in which the private sector is bound by strict laws, strictly implemented लिखिए. Private sector is bound by strictly implemented laws of the state. तो यानी laws फिर regulations का काम करते हैं, उनको replace करते हैं. Strictly implemented laws of the state and the private sector on its own initiative, यानी regulations अगर नहीं भी हैं तो the private sector on its own initiative works या functions लिख दीजिए. Private sector on its own initiative functions or acts responsibly. Functions or acts responsibly. However, in the developing region, where the private sector, in the developing region, where the private sector is also
at the early stage of at the early stages of development, the, the private sector is also at the early stages of development. Regulations must be put in place. Regulations must be put in place to ensure that consumers are या consumers की जगह public लिख दीजिए, that the public is not exploited. That the public is not exploited. अब कल आप देखिए कि ओगरा का कितना बड़ा फेलियर है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पता चला कि प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो जब प्राइसेस नीचे गई थी तो इनको नुकसान हुआ था, क्योंकि इन्होंने वो तेल जो स्टॉक अप छोटा मोटे, वैसे तो स्टॉकिंग इस तरह से ओएमसीज नहीं कर पाती, लेकिन जो छोटे मोटे इन्होंने महंगा तेल बुक किया हुआ था ऑलरेडी, वो इनको बाद में प्राइसेस नीचे जाने की वजह से सस्ता बेचना पड़ा. तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए अब उन्होंने कल रात को होर्डिंग स्टार्ट कर दी. हालांकि क्लियर रेगुलेशंस हैं, पर उन रेगुलेशंस की एनफोर्समेंट वीक थी. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपके सामने सब रिटेल बड़ी कंपनीज ने अपने पेट्रोल स्टेशन और रिटेल आउटलेट्स बंद कर दिए जब तक प्राइस ऊपर नहीं चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट 3-4 आवर्स में पैनिक बाइंग होगी. We would run out of stocks and we would sell them 20 rupees lower than what we can sell them after 12 a.m. This is where Ogra had to ensure कि ये exploitative practice ना हो. In any case, coming back to this, so this is where regulatory bodies come in. अब लास्ट बात करते हैं और उसके बाद सेशन को बर्खास्त करेंगे. वो ये कि वर्ल्ड बैंक इसके बारे में क्या कहता है. अगर आपके कोई सवाल हैं तो then I'll entertain questions. वर्ल्ड बैंक ने क्या लिखा है इसके बारे में, वो लिखिए. रेगुलेटरी क्वालिटी, अगले पैराग्राफ में लिखिए, रेगुलेटरी क्वालिटी captures perceptions of the ability. Regulatory quality captures perceptions of the ability. Regulatory quality captures perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies. और ये बात पर भी लिख दी हुई है उसने गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में भी, तो वही एग्जैक्टली सेंटेंस यहाँ भी है. To formulate and implement sound policies and permit regulations that promote private sector development. अब यहाँ पर ये बात दी कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात नहीं की. उन्होंने कहा कि प्राइवेट गुड गवर्नेंस ये है कि आपकी जो रेगुलेशंस आप जरूर करो, लेकिन ऐसी रेगुलेशंस करो जो कि इनहिबिट ना करें प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ या डेवलपमेंट को. इनफैक्ट ऐसी रेगुलेशंस हो जो प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करें कि वो डेवलप करे. और वही बात जो हमने लिखी कि अगर वो डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली the private sector would begin to act responsibly as a developed institution. And when it does so, consumers would automatically be protected. Consumers would not be exploited. तो यहाँ वो ये कह रहा है कि promotion of private sector development regulations ऐसी हो जो inhibitive हो. In fact, promotive regulations हो instead of being inhibitive. So that's the idea. तो ओके, सो जस्ट रैपिंग दिस अप, हमने 6 इंडिकेटर्स और 6 डायमेंशंस को तफसील से डिस्कस किया. और शुरू में हमने बात की कि ये इनएलिएनेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है. इनमें से कोई भी इंडिकेटर को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते. और इस बात का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि यार हम कोई एक मुल्क है, हम 3 गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 हमसे रेलेवेंट नहीं है, या हम उनको एक्सक्लूड करते हैं, या हम उन पे काम नहीं करते. हम उन 3 करेंगे तो आप बाकी 3 के भी टारगेट्स कभी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंसी
तीन वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, पहले भी मैं तीन वर्ड्स बोले हैं, यूनिवर्सैलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड इनएलिएनेबिलिटी। अब भी मैं तीन वर्ड्स बोल रहा हूँ, दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट, interrelated and have strong complementarity. They complement each other. Interdependent, interrelated, and strong complementarity. This is the good the characteristics of the entire good governance framework. और उसके बाद फिर हमने बारी बारी छोटा छोटा मैंने आपको अपने अल्फाज में भी नोट एक्सप्लेनेशन और साथ वर्ल्ड बैंक की जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी लिखवाई, और फिर हमने थोड़ी सी इसकी एवोल्यूशन को भी डिस्कस किया। बच्चे में आपको सवाल क्या आता है, जाते जाते उस पर भी बात करते हैं थोड़ी सी। यूजुअली इसका सीधा सीधा सवाल आ जाता है, कभी किसी कोई स्टेटमेंट भी दे देता है, जैसे ऐसी स्टेटमेंट अगर आपको दे दी जाए कि गुड गवर्नेंस, मैं एक सवाल अभी यहाँ पे बनाता हूँ क्लास में आपके साथ साथ, कि गुड गवर्नेंस it is believed that good governance is critical for economic growth and development. Please comment. तो इस सवाल को जब आप करेंगे तो इसमें सिर्फ आपने चेंज ये करना है कि हर गवर्नेंस इंडिकेटर को, जैसे हम बात करते गए कि कैसे वो ग्रोथ या डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगा, वो सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेटमेंट लिखते हुए अल्टीमेटली ये सवाल वही 6 इंडिकेटर्स का है, और यही जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। कभी कभी बिल्कुल सीधा सवाल आ जाता है, स्टेटमेंट नहीं होती, सीधा सवाल होता है कि व्हाट आर द 6 इंडिकेटर्स या डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपने सीधा सीधा एनलिस्ट कर देना उनको, छोटा सा आप उसकी एवोल्यूशन का ऊपर या हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बैकग्राउंड का लिख दीजिए, उसके बाद वन बाय वन ये सारी हेडिंग्स देखकर एंड पे कंक्लूड करते हैं। अच्छी बात ये है, मैं थोड़ा सा इसका एक एड ऑन ये बताऊंगा कि ये जो गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं, इन सब का आपका जो डेटा है ना, जो मेजरेबल डेटा है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, WGI। आज मैं रिकमेंड करूंगा कि एक छोटे से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, WGI को गूगल करें, एक्सप्लोर करें कि नंबर्स क्या है, पाकिस्तान का रैंक क्या है ओवरऑल गुड गवर्नेंस में, बाकी ममालिक का क्या है। तो उसमें अगर आपको एग्जाम में डेटा भी याद हो और आप डेटा भी साइट कर सके साथ, तो दैट इज वेरी वेरी हैंडी। कि पाकिस्तान का कंट्रोल ऑफ करप्शन में क्या रैंक है, पाकिस्तान का रेगुलेटरी क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस एंड देयर क्वालिटी में क्या रैंक है, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ में क्या रैंक है, पाकिस्तान का वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या रैंक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी एक बहुत ही अहम बात है कि आप उन इंडिकेटर्स को मेंशन कर सकें और उनके जो करंट नंबर और एक दो और मुल्कों के साथ आप कंपैरिजन कर सकें न्यूमेरिकली। वो नंबर्स तो आई डोंट हैव एट द बैक ऑफ माय हेड, तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो जो आज आपने नोट्स बनाए हैं उसके साथ छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, नंबर्स ऐड कर लीजिएगा जिनको आप एज अ रेफरेंस या एज एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते। और देखिए, गवर्नेंस का अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, तो गुड गवर्नेंस का जब सवाल आता है तो वहां पे आप गवर्नेंस की भी जो हमने डेफिनेशंस लिखी है वहां से स्टार्ट करें, वहां से फिर एवोल्यूशन ऑफ गुड गवर्नेंस पे आए, और उसके बाद 6 इंडिकेटर्स की आपको 6 अलग हेडिंग्स बना के आपका पूरा 20 मार्क का सवाल इसमें सॉल्व होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की मैक्स वेबर की सिलेबस में थ्योरी है उसके भी 6 पॉइंट्स हैं। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस है, उसके भी 6 प्रोसेस के स्टेजेस या स्टेप्स हैं। गुड गवर्नेंस की भी 6 डायमेंशन या इंडिकेटर्स हैं। तो ये 18 चीजें आपको, और इन सब के ऊपर हम एक एक लेक्चर सर्व करते हैं, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, गुड गवर्नेंस, और जब हम ब्यूरोक्रेसी डिस्कस करेंगे तो मैक्स वेबर जो ब्यूरोक्रेसी के पायनियर थे, उनके 6 स्टेप्स हैं। उसके साथ साथ छोटी छोटी थेरीज हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कॉमेंट दिया था, वुड्रो विल्सन ने क्या कॉमेंट, there's one other theorist, उनका कार्ल मार्क्स ने, राइट, of course, how can I forget कार्ल मार्क्स। so मार्क्स ने क्या कहा था। तो 4 theorist हैं, पर उसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ मैक्स वेबर इसलिए है क्योंकि he was the pioneer। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के 6 स्टेप्स दिए हुए थे कि व्हाट इज अ टिपिकल ब्यूरोक्रेसी और उसमें क्या 6 चीजें होती हैं।
तो ये 6 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी सबसे ज्यादा सिंप्लिसिटी में है कि ये 6 तो 4 सवाल करने होते हैं, 3 आपके हर दफा इधर से ही पूरे हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी की 6 चीजें आती हो, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के 6 स्टेप्स याद हो और गुड गवर्नेंस के 6 इंडिकेटर्स याद हो, तो आपके 3 सवाल यहीं से हो जाते हैं। बाकी 4 सवालों में से कोई सा भी आपको जो एक आसान लगता है आप हर साल कर लेते हैं, और यही मैं हर अपने कैंडिडेट को और बच्चों को जिनकी हम तैयारी कराते हैं उनकी करते हैं। तो सवाल पूछिए, कोई है? मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। वैसे क्लास का टाइम खत्म होने को आया है। बताइए जी, इफ यू हैव क्वेश्चंस। कुछ नहीं समझ आया, मैं कुछ नहीं ठीक समझा सका, तो जरूर सवाल पूछिए। आई बी हैप्पी टू आंसर। हाउ और these indicators measured? सर वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हर कंट्री की स्टेटिस्टिकल बॉडीज हैं, वो यूजुअली वर्ल्ड बैंक को डेटा खुद प्रोवाइड करती है। जब वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स का डेटा कर रहा होता है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में कुछ डेटा वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से ले रहे होंगे हमारा करप्शन का, कुछ डेटा जो उनको रिक्वायर्ड है वो उनको पाइड प्रोवाइड कर रहा होगा, कुछ डेटा उनको स्टेटिस्टिक्स डिवीजन कर रही होगी, कुछ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा होगा, कुछ डेटा उनको जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे, सीएसओज, एनजीओज, अक्सर वो अपनी इंडिपेंडेंट एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च कर रही होती हैं। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च से मेरा मतलब है कि दे आर राइटिंग रिपोर्ट्स एंड कंडक्टिंग रिसर्च दैट कैन ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी एक्शन, जिसकी बेसिस ऐसी रिसर्च जिसकी बेसिस पे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर। तो पॉलिसी बहुत ज्यादा पॉलिसी या एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च कर रहे होते हैं एनजीओज या सीएसओज वगैरह, जो उन्होंने खुद प्रोग्राम्स रन करने होते हैं। उन प्रोग्राम्स के लिए पहले वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस रिसर्च में अक्सर वो ग्राउंड से कुछ नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वो नंबर्स भी वर्ल्ड बैंक पे कर लेता है। तो हर मुल्क के जो भी प्रोप्राइटरी उस मुल्क के रिस्पेक्टिव डेटा एवेन्यूज है, वहां से दे आर इम्पोर्टिंग डेटा, and then that data is fed into this central world governance indicator system. तो उसमें ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज की डेटा कलेक्शन बहुत पोर है, स्टेटिस्टिकल आर्म्स जो हैं गवर्नमेंट की उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उन मुल्कों के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के डेटा में कंजेक्चर्स भी हैं, बहुत ज्यादा कंजेक्चर्स हैं, यानी मिसिंग लिंक्स हैं बहुत ज्यादा। लेकिन सो या दैट्स हाउ दे डू इट। सर करप्शन सिर्फ पब्लिक पावर यूज करके ही की जा सकती है? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यस, फॉर द सेक ऑफ जो गवर्नेंस का जो स्कोप है, क्योंकि हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हु गवर्न्स, हमने ये सवाल शुरू में एड्रेस किया था, हु गवर्न्स? इट्स अ गवर्नमेंट दैट गवर्न्स, इट्स द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स। तो यहाँ चूंकि हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, we would only limit ourselves to talking about or discussing about the usage of public power or the usage of public resources. And when those resources or that power is used for private gain, then of course this whole question of integrity arises. Okay, fine. I'd be most happy to go. I'd just shut up and leave. मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। मुझे तो जो मेरी थ्रोट की हालत हो चुकी है, मैं तो चाह रहा था कि आप लोग मुझे चुप करवा दें। तो thank you so much everyone. Madam Fariha. Sir, please take care of yourself and be very safe. जैन साहब बहुत शुक्रिया सर।